A very good afternoon, everyone, and welcome to our special event celebrating National Innovation Day. I am Lalita Singh, Program Manager and Lead of Investment Readiness Program. Before we start, first, I would like to thank all of our panelists and viewers for taking the time for our joining special event. As we all know, innovation is driving force behind the growth of any economy. Startups are at the forefront of this innovation, bringing new ideas, products, and services to the market. However, with the great innovation comes great responsibility. And one of the most important responsibility that startups needs to seriously is take seriously is protecting their intellectual property. Before we dive into our discussion with our esteemed panel of IPR experts, let's take a moment and understand what intellectual property right really are and why they are matter, especially for the startups and innovators. Intellectual property rights refers to the legal right that protects creation of the mind, such as inventions, and artistic work, design, symbols, and unauthorized use from unauthorized use and exploitation. For today's event, we have a great lineup of experts who has joined us today, and they will share their insights, knowledge on patent, trademark, copyrights, and more. So, without further ado, let's kickstart our discussion. To start with, I would like to invite Mr. Pratik Vastav, who is a patent and trademark attorney and a founder of PNA Intellectual Property Right. Welcome, Mr. Pratik. Am I audible? Yes, sir. Yeah, yeah, please. Yeah. Pratik, I would like to ask you. It is a very basic question from like what exactly IPR is and why it is important for our startups or innovators. Yeah, so do you want me to speak in English or Hindi? Sir, it's you can go with the English only. You can mix English and Hindi both. Okay, so you want me to speak in English? Okay, fine. Yeah. See, so first of all, before understanding the concept of intellectual property rights, it is first of all important to understand that what exactly the meaning of property is. So when I use the word property, that means I have certain rights associated with that property, right? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई लैंड है या मैं मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है तो मेरे पास उसको उसमें ट्रांजैक्शन इनिशिएट करने के लिए एक राइट है. फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर उसको बेचना चाहता हूँ आई कैन सेल दैट प्रॉपर्टी. इफ आई वांट टू लीज दैट प्रॉपर्टी आई कैन लीज दैट. आई कैन मुझे किसी को ऐसे ही किसी को दान देना है मैं कर सकता हूँ. आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट, राइट? So the concept of intellectual property is similar to the concept of property only. But the only major difference between the property and the intellectual property right is this. Property is basically कि भाई आपके पास कोई tangible asset है, कोई intangible asset है. Intellectual property में intangible asset की बात होती है. अब इंटेंजिबल एसेट का मतलब ये हो सकता है कि कोई भी आपका जो ट्रेडमार्क है, आपके जो आपके इनोवेशंस हैं, जो आपके आर्टिस्टिक क्रिएशंस हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर्स हैं, ऑल दिस कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स. So the process of protecting the intangible assets is basically a process of IPRs, right? So that's the first thing. अब इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कॉन्सेप्ट है काफी क्या ब्रॉड है. और मतलब द फर्स्ट कॉपीराइट एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1956 और 57. 1957 से मतलब ये कॉपीराइट एक्ट है तो ये कोई यूनिक कॉन्सेप्ट है नहीं कि अभी 4-5 साल पहले ही आया हो. पर लेकिन उसकी अवेयरनेस अभी हमने चालू किया है, मतलब फिर गवर्नमेंट ने किया है, हमारे ऐसे अटॉर्नीज ने किया है चालू, हमारे इतने सारे स्टीम्ड एस्टिंग्विश सीनियर्स हैं यहाँ पे, इन सब ने अवेयरनेस का काम किया है चालू. तो नाउ पीपल हैव एक्चुअली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द आईपीआरस, द कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीआरस, द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द आईपीआरस. तो इंडिया में अगर हम आईपीआर की बात करें तो इसका एक डेडिकेटेड मैकेनिज्म है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो आईपीआरस को एडमिनिस्टर करती है
और इसके जो लॉ हैं, इसके जो संबंधित लॉ हैं, फॉर एग्जांपल इनोवेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ट्रेडमार्क के कॉन्टेक्स्ट में, आपके आर्टिस्टिक क्रिएशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो सारे लॉ टाइम बाय टाइम हमारे पास, हमारे बीच में रहे हैं। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि हमारे पास अब वो उसमें उसमें आए हैं, मतलब कि अभी हमारे उसमें नोटिस में आए हैं। तो इंडिया में इनोवेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास पेटेंट्स है, ब्रांड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास ट्रेडमार्क्स है, आर्टिस्टिक क्रिएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कॉपीराइट है, एंड उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर आर्टिकल के शेप को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट मैकेनिज्म है इंडिया के अंदर। जोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, सेमीकंडक्टर्स एक्ट हैं, प्लांट वैरायटीज हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिया के अंदर जो हैं वो प्रोटेक्ट हो रही हैं। तो अ, अगर हम पेटेंट्स की बात करें, सबसे ज़्यादा अभी जो बात हो रही है 2016 2014 के बाद, वो पेटेंट्स और ट्रेडमार्क के बारे में बात हो रही है। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में भी मेरे ख्याल से देखा होगा कि लगभग 75,000 पेटेंट ग्रांट हुए हैं। तो हम पेटेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही करते हैं बात, क्या नाम है करते हैं, ट्रेडमार्क के कॉन्टेक्स्ट में बात क्या नाम है करते हैं, और फिर ये जानने की कोशिश क्या नाम है करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली गवर्नमेंट इज डूइंग टू creating the awareness about intellectual property rights and why it is beneficial for the startups to file IP applications. तो पेटेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अगर आपके पास कोई इनोवेशन है, आपको लगता है इट इज़ यूनिक, कि वो यूनिक है, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप उसको मार्केट में मोनोपोलाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए आप उसका पेटेंट एप्लीकेशन कर सकते हैं फाइल इंडिया में। प्रोसेस बहुत आसान हो गया है आजकल पेटेंट फाइल करने का। तो यू हैव टू जस्ट कॉन्टैक्ट सम अटॉर्नी, और इफ यू वांट टू फाइल योरसेल्फ, यू कैन योरसेल्फ फाइल द एप्लीकेशन एज वेल। स्टार्टअप के कॉन्टेक्स्ट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक स्कीम इंट्रोड्यूस क्या नाम है किया था 2016 में, जिसमें कि अगर कोई स्टार्टअप है, उसको पेटेंट एप्लीकेशन करना है फाइल, तो उसके लिए जो फीस है, गवर्नमेंट फी है, गवर्नमेंट फी, इंडिविजुअल की फीस और कंपनी की फीस, स्टार्टअप की फीस सेम कॉन्टेक्स्ट में, मतलब वो आए हैं, मतलब कि नहीं, कि अगर किसी स्टार्टअप को पेटेंट एप्लीकेशन करना है फाइल, तो उसको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत उसमें है नहीं। ये तो हो गई एक बात। सेकेंडली, प्रोफेशनल फी के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट की जो स्कीम है, SIPP स्कीम, जो अभी गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके अंदर स्टार्टअप्स को सिर्फ गवर्नमेंट फी करना है, पे करना है। बाकी का जो प्रोफेशनल फीस है, वो पूरा गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से मतलब देती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक IP फैसिलिटेटर हूँ, एंड मेरे पास कोई स्टार्टअप आया, पेटेंट जिसको वो करना है, पेटेंट फाइल करना है, और वो अभी सिर्फ आइडिएशन स्टेज पे है, उसका कोई अभी प्रोटोटाइपिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, उसकी अभी फंडिंग का इंतजाम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, बट ही वांट्स टू फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन, बिकॉज उसको आगे जाके फंडिंग में काम आएगा, वो पेटेंट सारी चीजें काम आएंगी। सो ही कैन कम टू मी एंड सीक माई एडवाइस ऑन अ प्रो बोनो बेसिस, एंड दैट प्रो बोनो मीन्स प्रो बोनो, मतलब आप जो खर्चा, पहले आप मान के चलिए, आज से 7-8 साल पहले तक लाख लाख रुपए तक अटॉर्नीज का जो खर्चा आता था, वो गवर्नमेंट ने पूरा प्रो बोनो कर दिया है, कि आपको स्टार्टअप से कुछ चार्ज नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट गिव देम एडवाइस, यू हैव टू असिस्ट देम इन क्या ड्राफ्टिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, फाइलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, और जो भी उसका खर्चा आएगा, प्रोफेशनली खर्चा आएगा, पूरा गवर्नमेंट एजेंट के अकाउंट में डायरेक्टली करेगी ट्रांसफर। सो दिस इज द फर्स्ट यूनिक थिंग जो गवर्नमेंट ने किया, कि अभी तक ये वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं हुआ है। जो SIPP स्कीम है, अभी तक वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ है। 2016 में ये पहला ये इंडिया में ये हुआ है, ये चीज। अब ट्रेडमार्क के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो ट्रेडमार्क के कॉन्टेक्स्ट में भी जो सिर्फ सरकारी खर्चा मतलब देना है SIPP स्कीम के अंदर, बाकी की जो प्रोफेशनल फीस है, वो गवर्नमेंट डायरेक्टली एडवोकेट के अंडर वो अकाउंट में क्या नाम करती है, इनिशिएट करती है। तो कहने का मतलब सिर्फ इन शॉर्ट ये है कि गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग स्टार्टअप्स टू फाइल IP एप्लीकेशंस, बिकॉज अगर आप हम इकोनॉमी की करते हैं बात अगर, तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है GDP में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ 15 से 20 का ना परसेंट है। ये मैं बहुत मैक्सिमम टाइम में आपको कर रहा हूँ, आपको मतलब क्या बता रहा हूँ। और जो USA है और जो यूरोपियन कंट्रीज है, USA का जो GDP में IP का कंट्रीब्यूशन है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 41 to 45 कैन परसेंटेज। एंड सिमिलरली फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कंट्रीज, जो उनका GDP में IP के कॉन्टेक्स्ट में कंट्रीब्यूशन है, दैट इज 40 to 45 कैन परसेंट। So to in order to increase the value, गवर्नमेंट अब मतलब ये सारी चीजें लेके आ रही है, so that
startups can file patent applications, innovators can file patent applications, small entities can file patent application, so that उनका एक market monopoly create होगा. No one can copy them. They can uh, uh, they can also take legal action against someone who is trying to copy their innovation, right? So this creates the market monopoly. They can even earn royalties through that. So this is my point for the concepts of IPR and these startups. Yeah. If you have any questions, I am open to answer. Yes, as you said that government is providing assistance for IP and patent rights. Yeah. So, is there any benefit that government provide, like they can get refund or rebate from this process of fees? मैम देखिए अब वो स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग वो है. फॉर एग्जांपल जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ एमपी का है, उसमें एमपी स्टार्टअप टेकन डिपार्टमेंट है. अ, अगर आप पेटेंट फाइल करते हैं और पेटेंट अगर आपका ना ग्रांट हो जाता है, तो कुछ लाख रुपए तक आपको उसमें वो रिएम्बर्समेंट करके मतलब देते हैं. सिमिलरली फॉर इंटरनेशनल आईपी एप्लीकेशंस, अगर आप पेटेंट एप्लीकेशन इंटरनेशनली किया है फाइल, तो आपको लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का वो आपको रिएम्बर्समेंट करके मतलब देते हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एज सच कोई रिएम्बर्समेंट स्कीम नहीं है. एक स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का था, बट आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज अवेलेबल राइट नाउ और नॉट, बट ये था. अभी के कॉन्टेक्स्ट में हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना वो है. तो एमपी Oh. गवर्नमेंट ये भी क्या नाम है कर रही है. Well, thank you, Pratik, for such an insightful explanation. Now, let's go deeper and understand different type of intellectual property rights. For that, I would like to invite Mr. Govind Sharma, who is a registered patent agent, startup consultant, and mentor. Welcome, sir. Okay, thank you, Lalita. You are Lalita, na? Hello, Yes, sir. Yes, hello. yes, sir. Can you hear me? Yes, sir, I'm you're audible. audible. Yes, sir, perfectly Okay, audible. okay. Thank you, Sir, Lalita. my Lalita, the question to God you has been. can, Yes, please. sorry. Go ahead. Go Yeah. ahead. Go ahead. So, Yes, ask your question. so my question to you, can you please explain, as Pratik also mentioned, different kind of intellectual property rights. So, can you please explain Okay, them in a little bit more brief way? okay. Certainly. Lalita, you see, the God has been very kind to us. He has given a wonderful thing to us called the brain or the mind. Mother Earth has given us natural material, natural resources, lot of natural resources. What we have done in the past, the man has been using his mind on the available natural resources to create many products, many things for our convenience and comfort. But all these things were in public domain that time. In the earlier period, all these things are in the public domain. So anybody could have used these creations without any restriction and without making any payment. So, realizing the commercial importance of these intellectual property, all the governments in the world at the end of the 19th century thought that why should we not give the ownership right to the creators of these creation so that he can better control the use of intellectual property. So, in light of that, several intellectual property law has been enacted in several countries of the world, including India. So the first important law is the patent, basically, patent law. So patent is the single most intellectual property which is responsible for the techno-economic development of any nation, including India also. So see, let us see what is patent. First of all, I want to tell you, if you see the definition of intellectual property, if you sit down on the Google and you Google intellectual property, you will find thousands of definition of intellectual property, which even I don't understand many of them. But my definition of intellectual property is tradable product of mind. That means you can link your creation, you can link your intellectual property with revenue generation or with the commerce. So in that, several intellectual property has been enacted, classified, the intellectual property classified into several subjects. But
I'll discuss only about five intellectual property which are very, very important for any business, any startup, or any entrepreneur. The first of them is called the patent. Patent, as I said, it is very important intellectual property. All technical techno-economic development is based on this intellectual property. What is basically patent? Patent is a monopoly right granted by the government for full disclosure of invention to the owner or his assignee for a limited period of 20 years. So there are some requirements of granting a patent also. So basically, let us see what are the requirements. So invention patent is granted for the inventions only. So there are certain requirements. What is invention? Invention must be related to a product, process, or both. Actually, the invention should be an apparatus, a product, or a process for making them. So this is the first requirement. And second requirement for getting a patent is it must be new, novelty. New means or absolute novelty. That is first time in the world. When I was in service, many people are coming to me and used to tell me that I have done it first time in India. So first time in India is not going to work. It should be altogether absolutely new, first time in the world. Though your invention is examined against your invention is given only for it's a territorial right. So your invention, the patent will be granted only for the within the geographical boundary of India. But when it is goes for examination, your invention is examined against the available uh, information about that invention all over the world. So you should be very careful that your invention should be have the absolute novelty, that is first time in the world. Second requirement for your invention should be it must involve an inventive step. What is basically inventive step? That means some kind of technological advancement which was not there before. This is the called advancement. That is should not be again the same thing. I come that it must be the new. There should be novelty and advancement means technical advancement or the economic advantage or the both. When they examine, they see that it involves a inventive step. So what is inventive step? Technological advancement. The third is the important requirement for your invention should be is capable of industrial application. That means either your invention can be made or can be used in an industrial process. And the last requirement is your invention must be fully disclosed in your patent document. That means the application which you submit to the government, it should be fully disclosed there. The second one thing I want to tell you that for making an invention or for getting a patent on your invention, they don't see your qualification. You should not have a qualification from IIT Delhi or the Massachusetts, because during my 40 years career of managing innovation, I found that majority of the invention have come from the ordinary people. They are not even they are school dropout. They have not any formal education. The second important intellectual property that I want to discuss is the trademark. Trademark is basically a sign to identify the product of one company from the other company. Let us understand this with the help of the example. Suppose I keep 5, 6 television before you and I remove the sticker from all the television. And I ask you a question, can you identify which is Sony, which is LG, which is Samsung? And it's very difficult. You cannot identify because all television, they look alike. And they are made in the same company also. But one of my childhood friend in Noida, he manufacture television for all the company, makes for Sony, makes for Samsung, and for other companies also. So they are the trademark is basically sign of identification. So these sign can be they can include combination of words, logos, pictures, colors, sound, and smell also. Smell can also be protected as a trademark. Now the Yao Yodel sound, it was the first sound which was protected in India as a trademark in 2008. The Yao, the four bell sound of Britannia. If you see the attachment of Britannia industries, you will hear a four bell sound. This is also protected as a trademark. Smell can also be protected as a trademark. First smell trademark granted in US for a yarn thread produced by the company Usewells. Uh, it is a scent of plumeria blossom. Plumeria, in India, it is called champa. The flavor, the aroma of champa is
is there in the embroidery trademark. So advantage is when you smell you can easily identify, because trademark is why trademark is important. It is very easy to identify the product of one company from the other company over the period of time. Over the period of time, these trademark become the symbol of quality also. For example, Sony. When you buy a Sony television, you pay 20,000 rupees more from the other television with the same circuitry design, but you pay more. That is, when you buy a Sony, that means you are sure that you are buying the best product in the market. So trademark sometimes related with the quality symbol also. The next intellectual property which I want to discuss is the industrial design. You see, majority of the product today, they are bought by their physical appearance. If something look nice, you are attracted to buy those products. So industrial design, basically it protects the ornamental or aesthetic aspect of the article. So what it can be, it is made up of three-dimensional features, shows as a shape or the surface of an article, or a two-dimensional features such as pattern, lines, or the color. So these are the requirement that is characterized by only the eye. The trademark examiner it examine your design only by the eye. That means characterized by their appeal to the eye. An integration of art and design whereby mass produced product are improved for marketability. That means if your design is good, marketability also increases. See, the most of the jewelry, the automobiles, the furnitures you can see, and the your clothings, your ready-made garments, they are sold today by the design. So design plays a very, very important role in increasing the marketability of your product in the market. So it adds value to the product, because something look nice, you are tempted to buy it. For example, if you have got a glass set, a tumbler set, glass tumbler set in your house, and if you go to the market, if you're passing by some market and you see some other design of glass which is attractive to you, whether there is a use of in your house or not, but you are attracted to buy those glasses. So industrial design is very important. It makes it attractive to the customers. So when the customers are attracted, they are ready to prepare to buy the products also. One thing I want to clear here, that all these intellectual property, you are given the monopoly, but it is not the absolute monopoly. The monopoly is given for the limited period of time, because the government wants that the people, the creator, because creator has a tummy, he requires food, he requires water, and he requires all the things which an ordinary person want. So during that period, tenure which is given for the monopoly time, which is given for the creator, during that monopoly time, he can earn some money for his livelihood also. So that's why the protection is given for a limited period of time. Now, another example, another intellectual property which is very important and takes and plays a very important role in the growth of your business is the trade secret. What is trade secret? Basically, trade secret is the confidential business information. It could be a process, it could be a formulation, it could be a list of your vendors, it could be a list of your suppliers, it could be a list of your employees, and anything which gives you an edge over your competitor is considered as a secret business information or the confidential business information. There is no exclusive right. See, what an entrepreneur should, what IP entrepreneur should protect is a business decision. For an academic institution, yes, you can take a patent, you can take a trademark or whatever it is for glorification. But in business, because it all costs money. So therefore, it is a business decision with which intellectual property you want to protect your business. It's purely a business decision. It costs money. Again, I'm repeating, it costs money. So therefore, some people, they feel if they protect their formulation by this trade secret, I think they can protect the business as long as the information is rest to their heart, or as long as they keep the information secret. So there is no exclusive right. If somebody find the formulation with independently,
then you cannot you cannot file a case against them. Therefore, it is a non-exclusive right. There it is exclusive right. Other the three intellectual property which I talked, they have the exclusive right for a particular time. But in trade secret, you don't have any non-exclusive right, and you need not to register it. Those three, the earlier three which I discussed, for that you have to submit an application. You have to register them with some department. There are different departments available for each intellectual property. You have to file, submit an application, and you get the registration. But here there is no requirement of registration. Then it is protected as long as the information is kept secret. If by any means if it comes out, then you cannot file any case. You cannot file infringement suit against anybody. Therefore, it is also advisable to the intellectual to the business or to the company or to the startups or to the entrepreneurs that when they employ someone in the company, they should sign a confidentiality agreement with them. That is the agreement that they will not disclose the information of the company even while in service or even after leaving the service to any other party without the without the written permission of the owner of that secret information. So it involves no registration cost, no limited time for trade secret, unlike, for example, a patent which only lasts for 20 years. And I want to because examples makes you facilitate understanding you the things better. So here I would like to take examples of Coca-Cola and Kentucky. The Coca-Cola Kentucky and the Coca-Cola and the Kentucky Fried Chicken, they built the international uh, empire on only trade secret. The empire, their entire empire is built on the trade secret. Coca-Cola, that is the formulation for 120 years. There is no other Coca-Cola manufacturer in the world except them. If they would have protected their Coca-Cola formulation with a patent, I think they are today, because the patent right goes after 20 years, so there would have been several Coca-Cola manufacturers in the world. Similarly, with the Kentucky. And you see, I read somewhere the secret formula is kept by two people at a time in the Coca-Cola factory, and these two people are never allowed to travel together in the same direction, in the same vehicle. Now, for example, you are in a computer business, the source code in software application can also be protected with the help of trade secret. Now, the last which I want to discuss is the copyright. Copyright basically relates to the expression of idea. Idea itself is not protected, but how you express your idea, that's the same idea. If five people have the same idea, they express the same idea in five different ways, three different ways. All of these three will get the copyright protection. Now, this protects. What are the products they come under this copyright gamut? Is they protect sound recording, films, broadcast, photographs, the original artistic, musical and dramatic and literary works, computer software and databases. They are protected with the help of copyright. They cover both printed and the web-based material. In computer, the computer software application can be protected with the help of copyright law. A software code for a programming tool or software application, software code for website, and software code for uh, uh, databases. They are also protected with the help of copyright. Some company who manufacture products also. Some companies they manufacture products. You might have seen when you buy a refrigerator or a television, or when you buy a washing machine, some documents also come along with them. One is the user's manual, and there's the guarantee card. The user manuals and guarantee cards of your company you can also protect with the help of copyright. So other computer cannot take material from your user manual guide as well as guarantee card. So these five intellectual property which I just discussed, they are very. There are many more. Their geographical indication is there. Uh, there are plant production varieties are also there, but these five are common for all the industry. They are common for the industry, and why should protect it? Because you get an edge over your competitor for a particular period of time. And secondly, suppose your competitor copy or somebody copies, knowingly or unknowingly, you can sue them in the court of law, and you can recover the losses through the law. So that's why these the intellectual property,
They are very, very important for your business. Somebody told, my previous speaker said that they are the property. That means what you can do with your physical property, you can do the same thing with the intellectual property. For example, you have a house. You can sell your house. You can sell your patent. You can license your house. You can license your intellectual property. You can mortgage your house. You can mortgage your intellectual property. So what you can do with your physical property, you can do with the help of intellectual property also. So that's why there are some people. So if suppose you have a patent and you are not able to go to the entire market of a country, so you can license to cover up the entire market. With the help of a license, you can earn extra revenue from your intellectual property. So this is what I want to share with you people on intellectual property. If there are any question, the floor is open. Thank you so much, sir. I think you have explained very well all the different types of intellectual property rights. And for that, for next, I would like to ask Miss Pooja Kumar, ma'am. She is the director and founder of Innov Intellect. Welcome, ma'am. Thank you, Lalita. Uh, After knowing this different kinds of and different types of intellectual property right, one question most of the startups mind comes like, what kind of intellectual property right suits to their innovation? So ma'am, can you please tell us like which kind of startups can go with what kind of protections of their innovation? Lalita, see, when startups comes to a company or they contact me that, ma'am, I have an idea and I want to file the patent for that. Okay. So sometimes what happen, they are very confused. For example, कि अगर किसी ने कोई ऐप डेवलप की है और वो मेरे पास आया और बोला कि मैम मुझे इसका पेटेंट फाइल करना है, तो इन केस ऑफ पेटेंट ऑफिस सेज की पेटेंट ऑफिस हमारा कहता है कि अगर आपने ऐप डेवलप की है और उसका कोई हार्डवेयर लिंक नहीं है, तो आप उसका कॉपीराइट फाइल कीजिए। तो हम उसको सॉफ्टवेयर कैटेगरी में कॉपीराइट में फाइल कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि स्टार्टअप को खुद आइडिया है, नॉवेल्टी भी है, इन्वेंशन भी हैं, बट दे आर वेरी कंफ्यूज कि पेटेंट करना चाहिए, ट्रेडमार्क करना चाहिए, कॉपीराइट करना चाहिए। अब एक बार तो मेरे पास एक क्लाइंट आया, इसने बोला कि मैम मुझे अपनी कंपनी का नाम जो है वो पेटेंट कराना है। तो कंपनी का नाम जो है वो पेटेंट में नहीं जाएगा, वो तो आप ट्रेडमार्क में फाइल करेंगे। ओके, जैसे गोविंद सर ने और पहले जो हमारे मेंटोर थे उन्होंने बताया कि आईपीआर इज अ वेरी क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। जो भी हम अपने दिमाग में आइडिया सोचते हैं, वो आइडिया चाहे वो पेटेंट में कैटेगरी में फॉल कर रहा है, चाहे ट्रेडमार्क में फॉल कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसको लीगली प्रोटेक्ट करें। लीगल प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है कि आप उसका पेटेंट फाइल करें, ट्रेडमार्क फाइल करें, कॉपीराइट फाइल करें और डिजाइन फाइल करें। अब कई स्टार्टअप्स मेरे पास आते हैं कि मैम अगर नहीं भी फाइल करेंगे तो क्या होगा? नहीं फाइल करते हैं तो क्या होगा? देखो, नहीं फाइल करेंगे तो क्या होगा, एक मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूँ। कल ही मेरे पास आया, मेरा ही क्लाइंट था जिनका हमने एक पेटेंट फाइल किया, और पेटेंट फाइल करने के बाद सर ने एक एनडीए साइन कराया था अपने वर्कर्स के साथ, ठीक है, कि आप मेरी जैसी मशीन कोई नहीं बनाएगा और कल को आप हमारा आइडिया कहीं किसी को बताएंगे भी नहीं। एनडीए साइन करने के बावजूद उनके जो वर्कर्स थे उनकी कंपनी में, उन्होंने सेम मशीन डेवलप करी और वही प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं। तो सर का मेरे पास फोन आया कि पूजा, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हम क्या कर सकते हैं? और उनका जो पेटेंट है वो अभी पब्लिकेशन स्टेज पे है। वी हैव फाइल्ड एग्जामिनेशन, येट पेटेंट ऑफिस से अभी एफआईआर आनी बाकी है। तो नाउ उन्होंने कहा कि हम इनके ऊपर केस फाइल करें। तो अभी क्योंकि पेटेंट ग्रांट नहीं हुआ तो इन्फ्रिंजमेंट का तो केस हम नहीं डाल सकते, बट क्योंकि उन्होंने एनडीए साइन किया था तो इसीलिए हमने उनको बोला कि एनडीए साइन किया, उन्होंने ब्रीच किया है आपका, ठीक है, तो आप उसके लिए पुलिस में एफआईआर करा सकते हैं कि इन्होंने आपका जो इन्वेंशन है, जो ऑलरेडी आपका पेटेंटेड प्रोडक्ट था, वो इन्होंने चोरी किया, ठीक है। तो नाउ दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस, तो उन्होंने सीधा अब आगे किसी लॉयर से बात करके उसको नोटिस भिजवाया, लीगल नोटिस, कि आप ये काम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी टेक्नोलॉजी थी और एनडीए आपने ब्रीच किया। तो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर लीगल प्रोटेक्शन नहीं ली होती सर ने, पेटेंट फाइल नहीं किया होता, तो फिर कैसे वो सू कर सकते थे या कैसे उसको लीगल नोटिस भेज सकते थे। सो दैट इज वाई कि अगर कोई स्टार्टअप अपना बिजनेस शुरू करता है, बिकॉज अभी आईपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को इंपॉर्टेंट समझ में आने लगी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपके दिमाग में आइडिया है, आप सबसे पहले उसका पेटेंट फाइल करें, ट्रेडमार्क फाइल करें, नाम का ट्रेडमार्क फाइल करें जो आप कंपनी शुरू करते हैं, और उसका अगर टेक्नोलॉजी पे काम करने, कोई प्रोडक्ट है इनोवेटिव, कोई प्रोसेस पे आप काम कर रहे हैं, तो आप उसका पेटेंट फाइल कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैम ये कुछ नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है, प्रोसेस भी नहीं है,
बट हम एक एल्गोरिथम पे काम कर रहे हैं, हम एक सॉफ्टवेयर ऐप बनाया हमने, तो आप उसका कॉपीराइट फाइल कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैम हमने कोई डिजाइन बनाया है, इनोवेटिव डिजाइन है, जैसे मेरे पास एक अभी आया कि उन्होंने क्या किया कि ज्वेलरी के डिजाइन उन्होंने क्रिएट किए, और ज्वेलरी के डिजाइन उन्होंने हैंडमेड बनाए थे, और वो लोग क्या कर रहे थे, कपड़े की ज्वेलरी बना रहे थे, मतलब धागे को बना बना के दे आर मेकिंग वेरी गुड डिजाइन, एंड दैट क्लाइंट इज फ्रॉम मुंबई। तो उन्होंने कहा कि मैम ये मैं क्या पेटेंट करा सकती हूँ ज्वेलरीज को, तो आई सजेस्ट नो, इट इज नॉट पेटेंटेबल, इट गो इन इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो आप इनका डिजाइन फाइल कीजिए, एयरिंग के डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन से, नेकलेस का डिजाइन था। तो इनोवेटिव डिजाइन में जो डिजाइन वाली चीजें हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ डिजाइन है, तो आप उनको डिजाइन में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे राइट्स तो सब बता ही चुके हैं कि पेटेंट के राइट्स आपको 20 ईयर्स के लिए दिए जाते हैं, उसके बाद पब्लिक डोमेन में आपके राइट्स आ जाते हैं, तो 20 साल तक अपने राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव राइट मिल जाते हैं आपको पेटेंट करने के बाद कि थर्ड पार्टी कैन नॉट यूज योर इन्वेंशन, और अगर इन्वेंशन यूज करती है तो यही फायदा है कि अगर आपने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर लिया, लीगल प्रोटेक्शन ले ली, तो यू हैव अ राइट टू सू दैट पर्सन। नाउ नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कई बार स्टार्टअप ये पूछते हैं कि मैम पेटेंट ग्रांट होने के बाद हम कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं या फिर हम वेट करें ग्रांट होने का। नो, द डे यू फाइल द पेटेंट, द डे यू फाइल योर थिंग्स, द राइट स्टार्ट फ्रॉम दैट डे। जिस दिन आप अपना पेटेंट प्रोटेक्ट करते हैं, जिस दिन आप अपना पेटेंट फाइल करते हैं, उसी दिन से आपके राइट शुरू हो जाते हैं। तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो अगर 3 साल बाद या 4 साल बाद पेटेंट ऑफिस से ग्रांट हो रहा है तभी आप कोई एक्शन लेंगे। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, सबसे पहले, और जैसे कि यहाँ पे स्टार्टअप स्कीम्स के बारे में बताया गया, आई एम ऑल्सो स्टार्टअप फैसिलिटेटर, हेल्पिंग लॉट ऑफ स्टार्टअप्स इन प्रोटेक्टिंग देयर पेटेंट्स, एंड वी आर नॉट टेकिंग एनी प्रोफेशनल फीस। तो हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट फीस पे आपका काम करते हैं। अगर आपको ट्रेडमार्क फाइल करना है तो वी चार्ज 4500 फीस फॉर द फाइलिंग ट्रेडमार्क, और कॉपीराइट अगर फाइल करना है तो आपका 12,000 फीस लगेगी। बट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपके पास डीपीआईटी का स्टार्टअप सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप स्टार्टअप में फॉल नहीं करते हैं, बट आप अगर एमएसएमई में फॉल करते हैं, तो आपके लिए रिम्बर्समेंट के ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। जैसे एमएसएमई जो है आपको 1 लाख रुपए रिम्बर्समेंट देती है जब आपका पेटेंट फाइल होने के बाद ग्रांट हो जाता है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स थे जिनके पेटेंट ग्रांट हो गए और उनको रिम्बर्समेंट का अमाउंट वापस भी मिल गया। सेकेंड, अगर आप पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करते हैं, इंडिया से बाहर फाइल करते हैं, 5 लाख रुपए तक का, उसमें भी आपको रिम्बर्समेंट मिल जाता है। तो उसके लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ट्रेडमार्क मिल गया है, ट्रेडमार्क फाइल हो गया, ग्रांट भी हो गया, तो उसके लिए भी आप एमएसएमई की साइट पे जाइए, वहां पे रिम्बर्समेंट का एक ऑप्शन है। रिम्बर्समेंट में जाएंगे तो अगर आप पेटेंट का रिम्बर्समेंट चाहिए तो आपको सारे बिल वहां लगाने होंगे, और वो आपको फाइनेंशियल ईयर में लाइक मार्च जैसे आने वाला है तो आपका बिल क्लियर कर देंगे। सेकंड, ट्रेडमार्क के लिए, डिजाइन के लिए भी 10,000 रुपीज वो लोग दे रहे हैं, ट्रेडमार्क के लिए भी पैसे दे रहे हैं। तो आप ये सारे बिल्स आपको विद सर्टिफिकेट वहां लगाने होंगे, ओनली देन यू आर गेटिंग द रिम्बर्समेंट। उसके अलावा हमारी यूपी गवर्नमेंट भी 1 से 2 लाख रुपए तक रिम्बर्समेंट प्रोवाइड कर रही है अगर आपका पेटेंट ग्रांट हो जाता है। तो ये भी स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि आपको भी पता है जब स्टार्टअप अपने आइडिया को लेकर, तो उनके सबसे इंपॉर्टेंट उनकी प्रॉब्लम रहती है कि मैम फाइनेंशियली हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं है, हमारे पास पैसे की कमी है, फंड नहीं है हमारे पास। तो दे डोंट हैव टू वरी, क्योंकि गवर्नमेंट आपको हर चीज के लिए सपोर्ट कर रही है, फंडिंग भी प्रोवाइड कर रही है, चीट फंड आपके पास है, स्टार्टअप्स के फंड आपके पास है, तो आप उन फंड्स को यूज करके अपनी आईपी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो भी फंड नहीं है तो आप स्टार्टअप फैसिलिटेटर्स को जो नॉमिनेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने पैनल के अंदर, जो स्टार्टअप्स को हेल्प कर रही है, आप उनकी भी मदद ले सकते हैं ताकि आप अपने आईपी को प्रोटेक्ट कर सके। Thank you so much, ma'am. Very well explained all of the factors that can be protected. And for next, we have Mr. Vijay Kumar Sahu, sir, HOD of Technology Innovation Support Center, IP Facilitation Center, and from National Research Development Corporation. Welcome, sir. Thank you, Lalita ji, and good afternoon all. Jai Sri Ram. It's a great opportunity to part of with all the IP stakeholder, including startup, MSME, and industry. And certainly we congratulate. But this is a time very risky and challenging time, 1 o'clock. But let me also brief you that what we do as a national entities of Government of India. NRDC is a one-stop provider of technological innovation support, the technology from bench side to the bedside, technology from lab to the land, in doing all kind of value addition, including IP management. So
And also we are part of the WIPO Green and providing green technology for global sustainability in the WIPO Green framework of United Nations under the World Intellectual Property Organization. And one of the very interesting thing I wanted to inform you, while the deliberation, I got a email that two women startup uh, who have a startup, the company name also I can tell, but I don't want to mention in this public forum. They got a patent today, and the beauty of their technology and innovation is that it will mitigate the challenge of the farming community, and that too in aquaculture. So point I wanted to tell you is that by getting this patent, they have a freedom to operate in the market. जो दिखता है वो बिकता है. So point I wanted to bring to all the stakeholder is that जब तक हम कोई चीज नहीं देखते हैं तो विश्वास नहीं करते हैं. So we need to create the knowledge, acknowledge the knowledge, protect the knowledge, and manage the knowledge and monetize the knowledge. And that's the part today we are here. And I'm happy to inform you that our department has got a national IP awards last month from government of India, and we are part of many of the stakeholders, even Subham, Pratik, Dr. Mishra, and also Pooja, including Govind Sharma ji, is also part of our ecosystem. So this is a ecosystem for collaboration, co-creation, and celebration. And that is a celebration we are connecting to the people at last mile in providing IP support. I sit in Visakhapatnam, and this is a place where many MSME and startup hub are there. And some of them, I wanted to tell you and inform you, one of the lady entrepreneur today came out with a herbal sanitary napkin. I wanted to show it. This is the woman empowerment we are giving to the community at the last mile. A woman, a distress can get an opportunity in creating livelihood, and we have to brand it, protect it, connect it, collaborate it. That's the IP today. And because IP creation is most important, until unless you own, you can't give it. And we have seen in the case of Haldi, Neem, and Basmati. And India came out with all policy practice, including national IP policy, national innovation startup policy, which is a guiding framework for higher educational institution. And also today, Anusandhan Research Foundation came out. The objective is to be self-reliant India, and also the clarion call of Honorable Prime Minister of India, Viksit Bharat. So until unless we create, we can't connect. So creation, connection, collaboration, co-creation is need of the hour on innovation, and that's the IP. The DPDP Act has come recently. Government of India came out, Digital Protection Act. You might be knowing that is a protection for the digital right to the individual in the knowledge economy, because no, this is a economy, and and in this economy is driven by knowledge, and knowledge must be acknowledged. And that's the plagiarism, piracy, infringement is many of the places has been reported. And startup, let me also tell you one of the interesting example. I think Pratik came few year back, and we met at IIC Bangalore. But at that time, one of the startup had a very biggest challenge of infringement, and he got a funding from one of the institution from government of India. So point is that whether we will fight that infringement or he will manage his incubation process as far as technology or innovation is concerned. So we must first protect, and protection is most important, so that we must not knowingly or unknowingly infringing others. I think all the momentum created by the people like all in the country is very very interesting. In fact, Rajya Sabha also, in the recently the honorable minister, the DPIIT talked about India had to put in place all the policy flagship program. It is a time for collaboration, and without collaboration no one achieve. So we can't achieve in isolatedly, and today we are here because of collaboration. I think many of the stakeholders who are joined digitally are connected with us, and today we are celebrating some of the innovation for global sustainability. And last point I would like to tell you, as far as the my organization is concerned, we have many technology. No need to develop your own technology. We have a national institution that to having a 39 labs. Many of the labs have the taken came out with the protected IP protected technology, validated technology. So until unless the technology is validated, market cannot be accessed. So when we talked about intellectual property readiness level, we must look into the innovation readiness level. Whether that innovation and IP we are taking to the market is market driven, innovation driven, societal driven or not, that we must have to look.
And let me also inform you some of our contribution. In the corona, we transfer and commercialize one of the beautiful technology that we have seen. We lost many of our known faces also. It is called Navarakshaks PPE kit that was developed by a doctor during that pandemic only. We transfer this technology to as many as 20 MSME and those who are making us proud. And that is one of the, I think, very interesting technology at that difficult period. So innovation has no kind of degree or thing, but we have to collaborate, protect, manage. Then only we can celebrate the innovation, and that is the clarion call. Today we are part of it in the form of Startup India, Make in India, Digital India, Skill India, and Self-Reliant India. Jai Hind, Bande Mataram. Thank you so much, Vijay sir, for explaining. As startups navigate the complex world of intellectual property, they also need to understand the pitfalls and mistakes they should avoid when it comes to intellectual property rights. For that, I would like to invite Dr. Ram Kumar Mishra, who is a startup mentor and financial professional and an angel investor. So please shed some light how startups can avoid these mistakes. Thank you, ma'am. Uh, Actually, at the outset, I would like to congratulate all the innovators on this Innovation Day. And in 2016, uh, we were in the Global Innovation Index. The ranking of India was 81, and now we are at 40 in 2023. So we are doing wonderful actually, because of only the support of the government. As Sahu sir has already explained many initiatives taken by the government in this regard. Further, as far as DIPP is concerned, so the DIPP is the authority which give recognition to the startups. So many things are startups should take into consideration while going to IPR management, because it's a intangible assets. So we have to, just like we manage the risk management in our organization, risk management our company, so we need to have a proper strategy for IPR management. Unless and until we are going with this strategy, we cannot, because it's your assets. It can be bought, it can be sold, it can be licensed. So basically, it is the your idea where you are going to monetize your idea. So it can be theft also, it can be copyright also. There are many possibilities of infringement of these IP. As madam has already told that someone has some employee has come and he started making the product and started selling. So there was a IPR. They had already a IPR, then they were able to file the FIR. So, documentation is a very important part, and identification and filing up early stage application is very essential, that need to taken care. Then the classification is very important. The proper classification, we should go along with the proper classification, and we should understand, because it's our assets. Many startups we have seen they're struggling for finance. Many startups come to us, sir, we are unable to get the loan, we are unable to we are trying, but we are unable to find it. No, no one is ready. Even bank, even public sector bank, they are not ready, because despite of being so many government this thing leverages to the startups, but when it comes to the banks simply go for their documentation. They will look, do you have any property, then asset based loan. So this, if you have a IPR with you, you can have a easy finance with the bank or any private institution against your against your IPR. So very important thing is filing early stage, as told by madam. When idea came to you, as soon as you have idea, you just file an application at very early stage. It is the first thing. Second thing is documentation. Keep recording, keep publishing. It is very important.
documentation is very essential part of any IPR management, because we know it takes years to years for grant of this IPR. So we need to regularly document at every stage. So when IPR comes to the any litigation part, then it will help you to decision at your favor. It is very important thing. Then IPR, then we need, as Govind Sharma sir told, NDA is very important, non-disclosure agreement. Even if you are working with any employees or any this thing, then just if you are if you have hired a consultant with your employees, then get first step to get, before telling about any idea, just to get them signed with NDA, non-disclosure agreement. They need to sign that. What that madam has told, because they have signed the NDA, they were able to get this thing into the court. So there are many things which is required. Documentation is very important. Filing at early stage is very important. So these are mainly precautions, and other things are already told by Govind Sharma sir, has explained very well all these things. So that's all from my side. Certainly, sir. Thank you so much for explaining what kind of pitfalls, and the mistakes startups can avoid. So, as we all have discovered what is IPR, why it is important, what kind of IPR there are, and also how to avoid the pitfalls. The basic and major question is now how to obtain or how to register and maintain the intellectual property protection. So, to address this, I would like to invite Mr. Shubham Singh Thakur. He is a patent attorney and partner at Bodhik IP. So, welcome, Shubham. Am I audible? Yes. Yeah. So basically, the intellectual property right protection, it follows certain rules and regulations to get them protected as per the Indian law. And globally, the laws are more or less same. And the patent, for regarding the patent, basically what you do, there are certain laws, such as the draft should be prepared in a certain manner, and there is a fees associated with it for the individuals, for the startups, and for the other than natural person, which includes the anything that is not counted as startups or natural person. So that includes basically big firms and all, big companies and all. And the fees is mostly for them. And most of the fees is assigned to them. So basically, when let's consider the context of the patent filing only. For the patent filing, let's say there are certain features, such as your specification should be within 30 pages, and your claims should be within a limit of 10 claims. Otherwise, the charges will be more. So as soon as you file the patent, that is considered as Form 2. फॉर्म टू के अंदर क्या होता है कि आपकी स्पेसिफिकेशन होती है, और उसके अंदर आपका बैकग्राउंड होता है, मतलब आपका फॉर्म टू होता है, देन उसके बाद आपका फील्ड ऑफ इन्वेंशन, बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन, उसके बाद समरी ऑफ द इन्वेंशन होता है, उसके ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेंशन, समरी ऑफ द इन्वेंशन, फिर उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेसिफिकेशन, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्राइंग्स, देन आफ्टर उसके क्लेम्स एंड देन एब्स्ट्रैक्ट। ये सारी चीजों को इंक्लूड करके आपका 30 पेज से ज्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं जाना चाहिए। प्रायर टू दैट, अगर आपको स्टार्ट करना है, फाइलिंग शुरू करनी है, तो सबसे पहले आपको प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। अगर आपका आइडिया एक प्रीमेच्योर स्टेज पे है, देन यू हैव टू फाइल अ प्रोविजनल एप्लीकेशन। प्रोविजनल एप्लीकेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंप्लीट स्पेसिफिकेशन विद इन अ ईयर ऑफ टाइम। प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करने का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसमें आप जस्ट अपना बेसिक आइडिया डाल सकते हैं अलॉन्ग विथ योर फाइलिंग फीस, जो भी आपकी फाइलिंग फीस होती है। जैसे फॉर इंडिविजुअल इट इज 1600, एंड फॉर एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स ओनली देयर हैज बीन अभी जो नए नियम चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आपके अंदर वही फीस लागू होती है जो कि आपके इंडिविजुअल के ऊपर लागू होती है। सो दिस इज द रिलैक्सेशन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड, and other than natural persons, the fees is the maximum. After you file your provisional application for 1600, then इसके बाद हम लोग complete specification फाइल करते हैं within a year। आपने जैसी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करी वहां पे,
और उसके बाद विद इन अ ईयर उसके बाद अपने फॉर्म 2 होता है, इसमें फॉर्म 1 सबमिट होता है अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। जब आप फाइल करते हैं न्यू एप्लीकेशन को, तो उसमें आपको इन्वेंटर डिटेल्स देनी होती हैं, उसमें एप्लीकेंट डिटेल्स देनी होती हैं, और जितने भी राइट्स हैं दैट लाइज विद द एप्लीकेंट ओनली, नॉट द इन्वेंटर्स। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इन्वेंटर कंसीडर कि मैंने एप्लीकेशन फाइल करी है या फिर मेरा नाम वहां पे फॉर्म 1 में लिखा हुआ तो ये एप्लीकेशन मेरी है एंड आई विल बी एक्सप्लॉइटिंग इट। ये चीज नहीं होती। हमेशा क्या होता है कि जो फाइल कर रहा है एप्लीकेशन वो एप्लीकेंट के नाम पे होती है, और एप्लीकेंट कैन बी एन नंबर्स। तो जो राइट्स होते हैं वो अनडिवाइडेड इक्वल राइट्स होते हैं। तो एवरीबडी कैन एक्सरसाइज द राइट फॉर पेटेंट एज द इंडिविजुअल, कि किसी को शेयर नहीं है इसमें, ये नहीं है, जस्ट फॉर द लाइसेंसिंग पर्पस सामने वाले पार्टी को बताना होता है, अदरवाइज यू कैन एक्सरसाइज द पेटेंट एज होल। देन क्या होता है कि जब एक बार पेटेंट फाइल हो गया उसके बाद उसमें हम करते हैं रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल होती है। उसके बाद वो जो एप्लीकेशन होती है उसका टाइम पीरियड होता है 48 मंथ्स का। जिस दिन हमारी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन या फिर जब हमारी प्रायोरिटी डेट है जिस दिन एप्लीकेशन फाइल हुई उसके विद इन 48 मंथ्स आपको वहां पे फाइल करनी होती है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन के साथ जब आप रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो पब्लिश हो जाती है एप्लीकेशन। आपने एक बार उसको फाइल किया, अदरवाइज देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अर्ली पब्लिकेशन। अर्ली पब्लिकेशन के रिक्वेस्ट फाइल करते हैं तो वो चीज आपकी जो है स्क्रूटिनी के लिए जल्दी से बहुत जल्दी इनके आईपी इंडिया के पोर्टल पे आ जाती है। आईपी इंडिया के पोर्टल पे जब भी वो विजिबल होने लगती है तो उसके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग्स होती है, प्री ग्रांट अपोजिशन हो गया है, कोई भी चीज होती है तो वो चीज थोड़ी फास्ट हो जाती है। अब क्या हुआ कि जैसे इंडिविजुअल्स के केस में अगर एप्लीकेंट वुमेन है या फिर अदर देन नेचुरल या फिर अगर एमएसएमई या स्टार्टअप है या फिर कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि फंडेड है किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम से, या फिर कोई एप्लीकेंट वुमेन एप्लीकेंट है, इन सब केसेस में आजकल एक प्रोविजन आया है एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन का। एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जो एप्लीकेशन है उसको बहुत जल्दी उन लोग जो है एग्जामिनेशन कर देते हैं और उसके बाद उसका जल्दी जल्दी प्रोसेस शुरू हो जाता है। हमारे पास ऐसे कई केसेस हैं जिसमें 6 मंथ और 15 दिन में हमारे पास पेटेंट ग्रांट आ गया है, और हमारे पास 8 महीने का भी रिकॉर्ड है, हमारे पास 9 महीने का भी रिकॉर्ड है, एंड देयर आर सेवरल सच एग्जांपल्स जहां पे हमें बहुत जल्दी ग्रांट मिल गया है थ्रू एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन। सो कुडोस टू आईपी इंडिया फॉर एक्सपेडाइटिंग आवर प्रोसेसेस बिकॉज बहुत अच्छा चल रहा है सिस्टम अभी इनका, एंड द थिंग्स आर गोइंग वेरी फास्ट। तो एक बार जब एग्जामिनेशन हो जाता है उसके बाद इन लोग इशू करते हैं एफईआर, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में क्या होता है कि इसमें आपके नोवेल्टी इन्वेंटिव स्टेप को ऑब्जेक्ट करने के लिए एग्जामिनर कुछ कुछ डॉक्यूमेंट साइड करता है, और अगर कुछ चीज मिसिंग है आपकी स्पेसिफिकेशन से तो वो चीज पॉइंट आउट करते हैं उन लोग, और देन आफ्टर उसका रिस्पॉन्स सबमिट करना होता है हमें। उसका रिस्पॉन्स सबमिट करने के बाद फिर क्या होती है कि अगर वो रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्ट्री है तो एग्जामिनर या फिर जो कंट्रोलर होते हैं वो उसको अलाउ कर देते हैं एप्लीकेशन को। अगर वो अलाउेबल नहीं है एप्लीकेशन देन हियरिंग इज अपॉइंटेड। हियरिंग अपॉइंट होती है, देन 1 to 1 हमारे कंट्रोलर से डिस्कशन होता है कि इसमें ये सारे इश्यूज हैं एंड यू हैव टू करेक्ट देम। आइदर ये होता है या फिर हम लोग इसमें और होता है कि इसमें हमको नोवेल्टी इन्वेंटिव स्टेप समझाना पड़ता है कि जो साइटेड डॉक्यूमेंट्स है उनमें से हमारी एप्लीकेशन कैसे अलग है। ये सारी चीजें उनको एक्सप्लेन करने के बाद क्या होता है, उसके बाद हमें रिटर्न सबमिशन फाइल करना होता है 15 डेज के अंदर अंदर आफ्टर हियरिंग। एक बार अगर हियरिंग आपकी हो गई है उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री आपने आर्ग्यूमेंट्स दे दिए तो विद इन 15 डेज जब आप सबमिट करते हैं उसका रिस्पॉन्स वगैरह, देन आफ्टर उसके 1 to 2 मंथ्स के अंदर अंदर उसका डिसीजन फाइनल आ जाता है कि पेटेंट हैज बीन ग्रांटेड और नॉट। और ये टाइम कैन वेरी, ये कभी 2 मंथ्स होता है तो कभी 6 मंथ्स भी हो सकता है। Yeah, sorry. And to maintain, hello, Lalita, your mic is mute. Yes, sir. Please continue. Yeah, sir. And then after to maintain this patent, आपको इसके लिए रिन्यूअल फाइल करनी होती है हर साल। 20 साल के लिए पेटेंट ग्रांट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, बट इट हैज टू बी रिन्यूड एवरी ईयर। जब ये ग्रांट हो जाता है देन देयर इज अ प्रोसीजर जिसमें आप उसको जिस जिस दिन से फाइल हुआ है और जिस टाइम तक वो ग्रांट हुआ उसकी फीस अलॉन्ग विद सामने अगले साल की फीस कॉन्जिक्यूटिव फीस ईयरली पेड होती है। आइदर दिस कैन बी पेड एट वन टाइम और इट कैन बी पेड एवरी ईयर जब जब का आपको रिन्यूअल चाहिए होता है। तो दिस इज हाउ यू मेंटेन, यू गेट द प्रोटेक्शन ऑन पेटेंट एंड मेंटेन इट।
and the protection is for 20 years, but it has to be renewed every year. देन कमिंग टू द ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क की प्रोटेक्शन में क्या होता है कि ट्रेडमार्क की जो आपका क्राइटेरिया होता है उसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन या फिर वर्ड मार्क होता है या फिर डिवाइस मार्क होता है। ये फाइल इसमें भी सेम होता है कि आपका इंडिविजुअल फाइल कर रहा है या फिर कोई स्टार्टअप एंटिटी फाइल कर रही है या फिर अदर देन नेचुरल पर्सन फाइल कर रहा है। इसमें भी रिलैक्सेशन मिले हुए हैं, अदर देन नेचुरल पर्सन, वुमेन एप्लीकेंट या फिर आपका अगर ऐसी कोई एंटिटी जो कि गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है, तो इन सबको इसमें भी रिलैक्सेशन मिले हुए हैं। देन आफ्टर इसमें भी आपका स्क्रूटिनी होती है। देन आफ्टर उसमें आपके किस क्लास में आप अप्लाई कर रहे हैं ये चीज देखना पड़ेगा। देयर आर 45 क्लासेस। तो जब भी आप अप्लाई करते हैं तो देयर इज एब्सोल्यूट देयर आर एब्सोल्यूट ग्राउंड्स और देयर आर रिलेटिव ग्राउंड्स अंडर सेक्शन 9 एंड सेक्शन 11, जहां पे आपके ट्रेडमार्क को उन लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेडमार्क की आपका जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए, इट शुड बी वेरी डिस्टिंक्टिव। जो भी चीज के लिए आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोडक्ट से या फिर प्रोसेस से आपका ट्रेडमार्क रिलेट नहीं करना चाहिए। देयर इज अ डिस्टिंक्टिवनेस कि डिस्क्रिप्टिव है, सजेस्टिव है, टोटली न्यू है या फिर एकदम आउट ऑफ द ब्लू ऐसा कुछ मार्क है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। जैसे कैडबरी फॉर चॉकलेट्स। कैडबरी फॉर चॉकलेट्स जो हो गया कि कैडबरी इज हैज नथिंग टू डू विद चॉकलेट और इट्स इंग्रेडिएंट्स, करेक्ट। अगर उसी में आपने ऐसा कुछ बोलता है कि घाना चॉकलेट समथिंग, तो देन इट वुड बी एन इंडिकेटिव मार्क कि ये इंडिकेट कर रहा है। तो देन अंडर सेक्शन 9 इट वुड बी the examiner has at least the power to issue an examination report जिसमें मेंशन कर सके कि it cannot be granted, then you have to argue against it। एक ट्रेडमार्क की प्रोटेक्शन होती है 10 साल के लिए एंड इट और आपका जो ट्रेडमार्क होता है इट हैज टू बी यूज्ड। जब आप ट्रेडमार्क फाइल करते हैं और आपको मिल जाता है वो, इसके बाद अगर आपने इसको 5 साल यूज नहीं किया तो एक इक्विसेंस का इस पे कानून लागू होता है जिसमें अगर किसी और ने 5 साल तक यूज कर लिया आपका ट्रेडमार्क एज इट इज विदाउट यू ऑब्स्ट्रक्टिंग इट या फिर आपने इसको यूज नहीं किया सामने वाले ने, तो ये जो है वो मेंटेनेबल होता है कि हमारा ट्रेडमार्क हम 5 साल से यूज कर रहे हैं और इस पे एक्विसेंस लगना चाहिए क्योंकि सामने वाले पार्टी ने इसको यूज ही नहीं किया। तो ट्रेडमार्क अगर आपने अप्लाई किया है तो इसका सबसे होना चाहिए कि इसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होना जरूरी है कि आइदर आपने उसको कहीं पे यूज किया है किसी बिल में या फिर कहीं होर्डिंग में, इस चीज का प्रूफ आपको आपके पास होना चाहिए कि हाँ हमने इतने समय तक इसको यूज किया है। ये यूजुअली कई लोग भूल जाते हैं। और इसके बाद इसकी प्रोटेक्शन 10 साल की होती है। फिर आते हैं कॉपीराइट पे। कॉपीराइट का भी सेम होता है एज आपका ट्रेडमार्क होता है, लेकिन कॉपीराइट का सब्जेक्ट मैटर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉपीराइट के सब्जेक्ट मैटर में क्या चीज है कि एनीथिंग विच इज जो चीज आप ह्यूमन की क्रिएशन होती है वो एज इट इज प्रोटेक्ट होती है, ना उसकी कोई टेक्निकल फीचर्स होंगे इसमें इंक्लूड, ना ही उसमें कोई ऐसी चीज इंक्लूड होगी जो कि फंक्शनल होगी। उसमें सिर्फ जैसे कि आपने कोई पिक्चर बनाई या फिर कोई भी ऐसी चीज बनाई है जिसको आप सेल करना चाहते हैं कि उस चीज को कोई एज इट इज कॉपी ना करे, मेनली है कि कॉपी ना करे इसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन पे या फिर उसके जैसे कोई सॉन्ग हो गया या फिर कोई भी चीज हो गई जैसे कि कोई बुक हो गई, इस टाइप के इसके जितने भी इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है विच इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, सॉरी ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स। तो वो सारी चीजें होती हैं और इसमें प्रोटेक्शन क्राइटेरिया सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे सिनेमेटोग्राफी हो गया तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। जैसे कि लिटरेचर वर्क, लिटरेरी वर्क हो गया तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि 60 ईयर्स अदर देन जितनी आपका ऑथर ने लाइफ जी ली है प्लस 60 ईयर्स। तो हर एक के लिए क्राइटेरिया अलग अलग है इसमें। और कॉपीराइट प्रोटेक्शन जो है सबसे लंबे समय के लिए मिलती है बट इट्स नॉट एवरग्रीन। कॉपीराइट में प्रोटेक्शन एवरग्रीन है। एवरग्रीन प्रोटेक्शन इसमें सिर्फ और सिर्फ डिजाइन में मिलती है और आपका ट्रेडमार्क में मिलती है। ट्रेडमार्क में भी 10-10 साल के लिए रिन्यू होता जाता है, इट कैन कंटिन्यू फॉर एवर। कॉपीराइट में नहीं होती ये चीज। और कॉपीराइट में मैम मेंटेनेबल होता है केस तभी जब आपने कॉपीराइट फाइल किया हो, अदरवाइज पासिंग ऑफ का केस ही बन सकता है। अगर किसी ने कॉपीराइट रजिस्टर नहीं किया है फिर ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं किया है तो उस केस में सिर्फ उनके ऊपर पासिंग ऑफ का केस लगा सकते हो और उसमें सिविल जुरिस्डिक्शन के अंदर ही जो भी चीजें होंगी उसके अंदर ही आप कवर कर सकते हैं। डैमेजेस एंड अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। हाउएवर अगर आपने कॉपीराइट ट्रेडमार्क रजिस्टर कर रखा है तो आपके पास पावर्स ज्यादा होती हैं। डिजाइन रजिस्ट्रेशन का भी सेम है। डिजाइन रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक्स के ऊपर होती है और किसी चीज पे नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ जैसे कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन है।
तो इसकी प्रोसीजर में क्या होता है कि देयर शुड बी 7 व्यूज, top view, bottom view, front view, back view, left view, right view, and there should be a perspective. तो ऐसे 7 व्यूज होते हैं किसी भी चीज के 3D वाले, एंड दैट शुड बी फाइल्ड, कि ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में ग्रे स्केल में होने चाहिए। वो फाइल होने के बाद उसका सेम एज ए स्क्रूटनी होती है, विद इन अ मंथ और टू उसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है। और यूजुअली क्या होता है कि डिजाइन आर वेरी डिस्टिंक्ट, तो उसमें अगर छोटी मोटी चीजें भी होती है, और सिंस उसमें कोई भी ऐसी चीज का प्रोटेक्शन क्राइटेरिया नहीं होता जिसमें उसमें फंक्शनिंग है इसकी, सिर्फ और सिर्फ इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन पे होता है, तो फिर इस पे प्रोटेक्शन एज इट इज मिल जाती है, और बहुत इजीली मिल जाती है आपकी डिजाइन, और विद इन 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है इसमें। तो दैट्स अबाउट इट मैम, जिसमें मेंटेनेंस से आईपी का रजिस्ट्रेशन, इसमें इसके इनसाइट्स इससे ज्यादा अगर आपको चाहिए होंगे तो प्लीज लेट मी नो, मैं बहुत इजीली अवेलेबल हूँ। तो आपको अगर इसके बारे में ज्यादा जानना That's हो किसी great. को तो दे कैन लेट मी। यस। That's great, sir. Actually, I have one question. If anybody who wants to patent his creation or innovation internationally, so what kind of procedure they need to follow and what are the laws they need to follow? यस सर, यस मैम। एक्चुअली देयर आर टू मेथड्स, जैसे कि अगर आपको किसी कंट्री में फाइल करना है, यू हैव सिलेक्टेड सम कंट्रीज, तो आप कन्वेंशनल मेथड से जा सकते हो, आइदर पीसीटी के थ्रू। तो इसमें अगर आपको पीसीटी के थ्रू जाना है, कन्वेंशनल के थ्रू, तो यू हैव टू विद इन अ ईयर यू हैव टू मेक श्योर कि वो वहाँ बाहर जो है उसकी एप्लीकेशन एटलीस्ट फाइल हो गई है। और देयर इज अनदर वे, जो पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी, पीसीटी बोलते हैं जैसे। तो पीसीटी में क्या होता है कि जैसे कि आपने एप्लीकेशन फाइल करी, यू हैव 1 ईयर ऑफ टाइम। आपने अगर पीसीटी फाइल कर दी उस समय में, तो आपके पास एक कुछ सेट ऑफ कंट्रीज है, 165 कंट्रीज का राउंड। उसमें क्या होता है कि आपको प्रायोरिटी मिल जाती है, और उनमें आप विद इन ए टाइम फ्रेम होता है, जैसे कि यूएस में हो गया 31 मंथ्स का, ऑस्ट्रेलिया में हो गया 30 मंथ्स का, कनाडा में 45 मंथ्स का। जस्ट आपने अगर पीसीटी में अपना प्रोवाइड कर रखा है, पीसीटी फाइल कर रखी है, एंड इट इज वेरी एडवाइसेबल, क्योंकि जहां भी आपको मैन्युफैक्चर करना है आपको एटलीस्ट पीसीटी होना चाहिए, क्योंकि अंडर पीसीटी जो भी कंट्रीज है आपको प्रायोरिटी मिल जाती है इसमें। और फिर विद इन दिस टाइम पीरियड यू कैन गो इनटू सच कंट्रीज जो भी आप सिलेक्ट करना चाहेंगे पीसीटी में। अदरवाइज आप कन्वेंशनल मेथड से भी जा सकते हैं, जिसमें क्या होता है कन्वेंशनल कंट्रीज में इंडिविजुअली आप जाके फाइल कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल जाने के ऐसे 2 तरीके होते हैं यूजुअली। Thank you so much, Shubham, for sharing these valuable insights. Now, startups can move forward to obtain their IPR for their innovation. So, intellectual property right can also be leveraged for strategic advantage and competitive differentiation in the startup landscape. To understand this better, I would like to invite Mr. Vivek Dahiya. He is a IP practitioner, IP attorney, and a lawyer. So, welcome, sir. Hi. Thank you, Lalita. Thank you very much. So, sir, for you, my question is how can startups effectively leverage IPR for strategic advantage and competitive differentiation? Yeah. See, for IP should can be taken as an. I will tell you an analogy. When you build a house, you always ensure that your foundation is strong, because Correct. when you build a house already, you cannot redo the foundation. Similarly, when you're starting your business, IP is the foundation. Your idea, your concept, your brand name, your creation, your product, and everything. That's the foundation. And if you don't secure that innovation and don't leverage that for business, I will come to that. If you don't secure that, then you cannot redo it, because it is already in public domain, most of the things. Now, how you can leverage for business benefits? For example, if you have a patent pending application, you can tell the whole market, customers, and your stakeholders that you have an innovation pending and which might get granted, and you will have a monopoly at that stage. So, during the pending application, you can showcase prospective monopoly. Similarly, with the brand name, if you are not sure about a brand name, people, most of the startups, in my experience, I have seen that they just take the name. They don't bother about what it is. So never do this, because your brand name comes with a dollar value in your balance sheet. If your trademark is not enforceable, then that ad value, that dollar value not come in. And one thing for the trademark,
For the business part, you have to understand that your trademark is an identity of your brand, not a description. So Nike does not say it's a footwear. Nike does not say it's Nike shoes. Nike is Nike. So you have to choose that name which becomes an identity of your brand, right? So that is really important. Yeah. So I and for further part, you will get grants if you have a patent application, trademark, if you have a IP strategy in place. Even if you don't have a application spending, but if you have an IP strategy in place, there are high chances to convince investors to money in it, because that 5 page document will showcase that you are thinking in the future of the company and building assets in the company. So that IP, a strategy document, will help you take investments. Plus, there are government grants. There are a few government tenders which ask for it. And I think Sahu sir has already might have mentioned it. I joined lately, but there are a lot of things one can do it by leveraging it. Now, recently, CB, like there is a startup, there's a company who got the patent and their shares increased by 4% because the valuation increased because of the patent grant. So it is every patent application, granted patent, trademark, or design has some dollar value in your balance sheet, and that is an asset. And every startup, this is my advisory, in your pitch deck, always keep, when you're saying fund utilization, always say that we will use 10% of the fund to develop assets in the company. Rest all HR, marketing, all are, you're saying, you give me money, I will spend that money to make more money. How about, why don't you say that you give me money, I will build assets in the company? So that is how you can leverage IP for business. That's great, sir. Sir, I have a last question for you. What are some emerging trends and development in intellectual property law and regulation that startups should be aware of? Yes. So, in respect of India, in May 2023, there was a recent case being decided by Delhi High Court, which says that computer-related programs or computer-related inventions may be granted if they showcase technical effect. So, all those startups who are working in fintech, edtech, all those things, look for possibilities of filing patent applications. And there has been a recent decision in December from Madras High Court, where e-commerce applications can also be granted. E-commerce applications. Now, when you draft a patent, you have to be careful what you are drafting, and you need an expert. It's not like that we are patent attorneys that I'm selling my service. No. I give an example. You need a team. For example, there are two friends who are, one is neurologist and one is cardiologist. So cardiologist will not treat himself for neuro problem. He will go to neurosurgeon because it's a question of life. Similarly, it's an IP. You should go to an expert because it's a question of life of your business, of your startup. So Correct. that is why you always ensure that your IP strategy is in place, and always give importance to IP and new regulations. As I mentioned, there are a lot of with you, there will be banks in the future in India who will give mortgage on the basis of IP. Savvy and now an IPOs also, it will help if you have an IP to increase valuation. And yeah, so these are the case laws which are very much relevant. I thought I speak to you about, that is a Microsoft case, and other one is e-commerce case. Thank you so much, sir. So, with this, we have come to the end of our special session. Thank you to our distinguished panelists for sharing your expertise and insights on intellectual property rights and their significance for our startups. I hope today's session has been enlightening for all of our participants. And remember, protecting your innovation is vital for fostering creativity, driving growth, and ensuring a sustainable future. So let's continue to innovate responsibly and harness the power of intellectual property to the shape of a brighter future and tomorrow. Thank you so much for joining us today, and happy National Innovation Day. So thank you so much for all of you. Thank you, everyone. Thank you.